Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Hello students. We'll start problem number 2. See the problem number 2. The following is the balance sheet of PQR. The following is the balance sheet of PQR on 31st of December 2005. The partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Three partners PQR 5:3:2. Balance sheet is given creditors, bills payable, loan from P. See here, creditors and bills payable will be transferred to realization. Entry will be creditors account debtor, bills payable account debtor to realization. But loan from P should not be transferred to realization. It should be directly paid. It is a loan taken from one of the partner. Then general reserve. General reserve should be distributed among all the partners. Entry will be general reserve account debtor to P's capital, to Q's capital, to R's capital. This entry is exactly same what we have done in admission of a partner and retirement of partner. Then capitals PQR, cash at bank, sundry debtors less provision, stock, investment, fixtures, plant, freehold property. The partnership was dissolved. The assets realized the following. Stock and investment realized 10% less than the book values. So realized, when assets are realized, the entry will be bank account debtor to realization. Bank account debtor to realization. अब पूरे एसेट्स एक साथ ले सकते हैं. स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को 10% कम. स्टॉक कितना दिया है? 30,000 दिया. 30,000 में से 10% कम कर दिए तो 27,000. इन्वेस्टमेंट में से 10% कम. 10,000 minus 1,000, 9,000 will take. Debtors realized 17,500 and plant 30,000. Freehold property was sold for 85,000. Fixtures were taken over by P at an agreed value of 1,200. One of the asset is not sold. Fixtures. It is taken over by one of the partner P. तो P's capital account debtor to realization. अगर बेच देते तो बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन. बेच रहे नहीं बल्कि पार्टनर ले रहा तो पार्टनर P's capital account debtor to realization for these fixtures. Creditors were paid off at a discount of 5%. पेमेंट करते वक्त 5% कम देंगे क्रेडिटर्स को. एक्चुअली क्रेडिटर्स 30,000 है. 30,000 का 5% 1,500 होता. तो 30,000 में से 1,500 निकाल दो. 28,500 will make the payment to creditors. Q agreed to pay the bills payable. अगर bills payable को पे करते तो realization account debtor to बैंक लिखते थे, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं कर रहे बल्कि Q has agreed to pay, तो realization account debtor to Q's capital account. Expenses of realization amounted to 1,000. Realization account debtor to bank. Pass journal entries to give effect to the above and show the necessary ledger accounts. So it is asking you first of all to make the journal entries. First journal entry, it is given here. See carefully. First journal entry, realization account debtor to sundry debtors to stock to investment, fixtures, plant, freehold property. Except cash at bank. Cash at bank को छोड़कर बाकी के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिट कर दिए. And debtors should be credited at their gross value. The gross value is 20,000 before deducting provision for doubtful debts, right? Gross value always we should take, being the assets transferred to realization. Second entry, creditors account debtor, bills payable account debtor, provision for doubtful debts account debtor to realization. Liabilities, creditors or bills payable liability है और provision for doubtful debts a provision है. तो liabilities को और provision को debit करेंगे, realization को credit करेंगे. पहली एंट्री के लिए नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. सेकेंड एंट्री, बीइंग द लायबिलिटीज एंड प्रोविजन. बीइंग द लायबिलिटीज एंड प्रोविजन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. थर्ड एंट्री, नाउ सेल ऑफ एसेट्स. ऑल द एसेट्स आर सोल्ड. तो पूरों को ऐड करते जाओ. अब जैसा सेल ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट 10% लेस, तो स्टॉक के 27,000 रुपीज आ रहे, इन्वेस्टमेंट के 9,000 आ रहे, डेटा 17,500 आ रहा, प्लांट 30,000 आ रहा और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 85,000. ये सारे आइटम्स को ऐड कर दिए तो यू आर गेटिंग 1,68,500.
तो assets are sold for 1,68,500. तो बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन 1,68,500. Being the assets realized. Being the assets realized. Now piece capital account data to realization. Fixtures. 1,200 rupees के fixtures है. Fixtures were taken over by P at an agreed value of 1,200. अगर ये fixtures को बेचते तो बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन लिखते थे, लेकिन बेच रहे नहीं, पैसे नहीं आ रहे, बल्कि पार्टनर ले रहा, तो पार्टनर को डेबिट करना. पीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन 1,200. नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द फिक्सचर्स टेकन ओवर बाय पी. बीइंग द फिक्सचर्स टेकन ओवर बाय पी. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक 28,500. क्रेडिटर्स आर पेड. प्रॉब्लम में क्रेडिटर्स जो दिया है 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स दिया, और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि क्रेडिटर्स वर पेड 5% लेस. जितना पे करना था उससे 5% कम करे. तो 30,000 का 5% 1,500. तो 30,000 minus 1,500 28,500 rupees are paid to creditors. Entry will be realization account data to bank. Payment is made from bank. So realization account data to bank 28,500. Being the creditors paid off at 5% discount. Narration being the creditors paid off at 5% discount. Next, realization account data to Q's capital account 7,000. Bills payable. एक लायबिलिटी है बिल्स पेबल की, यहां पर ट्रांसफर कर दिया. बिल्स पेबल 7,000. ये लायबिलिटी एक्चुअली पे करना है, तो पे करने के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक आना था, बट दिस लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर. हु इज द पार्टनर? क्यू. क्यू हैज एग्रीड टू पे द बिल्स पेबल. बिल्स पे करने की लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी टेक ओवर कर ले रहा है क्यू. तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू क्यूज कैपिटल. पे कर देते अगर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक. अब पैसे नहीं जा रहे तो बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे, बैंक के जगह पर जो ले रहा उसको क्रेडिट करेंगे क्यू. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू क्यूज कैपिटल अकाउंट बीइंग द बिल्स पेएबल टेकन ओवर बाय क्यू. नेक्स्ट है realization account data to bank. This is for expenses. Problem है दिया realization expenses. तो realization account data to bank being the realization expenses paid. अब ये 7 entries pass करने के बाद, after passing the 7 entries, you have to leave some space and then next page you draw the account. Which account? Realization account. जब realization account बनाएंगे तो you will get profit on realization. अभी बनाएंगे. After rubbing this, I'll make the realization account. In that realization account, you will come to know there's a profit on realization of 24,200. 24,200 rupees profit you are going to get in realization account. Entry will be realization account data to P's capital, to Q's capital, to R's capital. तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को क्रिएट करेंगे. In the profit sharing ratio 5:3:2. Yes, 5:3:2. 5/10, 3/10, 2/10. तो 5/10 you'll get this one. 3/10, 24,200 into 3/10, you'll get this one. 24,200 into 2/10, you'll get this one. Being the profit on realization shared by the partners. Next है P's loan. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एक लायबिलिटी है लोन फ्रॉम P. पार्टनर के पास से लोन लिए थे, अब वो भी पे करना है. तो एंट्री विल बी लोन फ्रॉम P अकाउंट डेटा टू बैंक. Being the loan from partner paid off. Being the loan from partner paid off. Last one, general reserve. Liability side, you will find general reserve is there. You have to close, you have to transfer. So general reserve account data to P's capital, to Q's capital, to R's capital in the old profit sharing ratio 5/10, 3/10, 2/10. So 15,000 into 5/10, 7,500. 15,000 3/10, 4,500. 2/10, 3,000. Being the general reserve shared by all the partners. Last entry settlement. ये पूरा होने के बाद लास्ट में कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे. वो कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, कितना पैसा कौन से पार्टनर को कितना पैसा देना, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू पी, क्यू एंड आर. कितना कितना पैसा देना है कैपिटल अकाउंट में आएगा. तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यू विल फाइंड द बैलेंसिंग फिगर 48,400. यानी पी को जो पे करना है 48,400 पे करना है. अब पे कर देंगे तो पीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू बैंक. क्यू को पे करना है, क्यू को 43,750 पे करना है, अकाउंट में आएगा. तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेटा टू बैंक, आर्स कैपिटल अकाउंट डेटा टू बैंक. या एक ही एंट्री
P's capital account data, Q's capital account data, R's capital account data to bank. ये settlement की entry, ये last entry आएगी. Now we will make the accounts. First account will make realization account. This is problem number 2. Already we have written in journals. Now we are making the realization account. One account we are making for realization. Next we make partners capital account. PQR. PQR, 3 partners. Now I am making bank account. So these are the ledger accounts we require. Now see here, while making this account, partners capital account, first of all you have to take the opening balances. What are the opening balance of PQR? 30, 25, 15. And bank account opening balance, cash at bank how much? 6,000. So before posting the entries, first of all we must take the opening balances. Bank account को debit side लेंगे, capital account को credit side. Now we'll start posting the entries. The first entry what you have passed is realization account data. Journal entries. अभी जो pass करे journal entries वो निकालिए. First entry, realization account data to all assets individually. Now we'll take all the assets. First asset what you have taken? Sundry debtors. Sundry debtors. 20,000. Stock 30,000. Then investments 10,000. Fixtures 2,000. Plant 35,000. Then we have freehold property. It is 50,000. So we have posted the first entry, realization account data to all assets. तो पूरे assets जो है debit कर दिए. Second entry, creditors account data, bills payable account data, provision account data to realization. तो realization account credit side by creditors, by bills payable, by provision for doubtful debts. तो creditors are 30,000. 7,000, 1,000. चलिए, second entry we have posted. The third entry is bank account data to realization. Third entry which you have passed, bank account data to realization. Assets realized. How much are the total assets realized? 1,68,500. We have debited bank account, credit realization account credit side by bank. Assets realized 1,68,500. तो बैंक को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन, assets realized. Next one, next entry of past, P's capital account data to realization. तो ये P का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है. P's capital account data डेबिट करना है to realization. How much? 1,200.
तो पी के कैपिटल को डेबिट करना है, तो पी के कैपिटल को डेबिट करें, ये फिक्सचर्स के पैसे है, फिक्सचर्स। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय पीस कैपिटल फिक्सचर्स 1200, ये एंट्री पोस्ट होगी। नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक, ये क्रेडिटर्स को पे करें। हाउ मच अमाउंट इज पेड टू क्रेडिटर्स? 28,500। तो क्रेडिट रियलाइजेशन को डेबिट करें, बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन। Creditors 28,500. We have paid the amount to creditors. Next entry देखिए, realization account data to Q's capital. Realization को डेबिट करेंगे to Q's capital. ये bills payable ले लिया, सो ये how much amount? 7,000. 7,000 रुपए का बिल्स पेबल था जो एक पार्टनर ले लिया, अंडरटेक कर लिया। तो Q's realization account data to Q's capital. Q's capital should be created by realization. Bills payable कौन ले रहा है? Q। तो Q के अकाउंट में 7,000, Q's account 7,000. तो 6 entries we have posted. What is the 7th entry of past? Realization account data to bank. Realization account data to bank, expenses है। The expenses of realization are 1,000. बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन। और नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेटा। अब प्रॉफिट है या लॉस है मालूम करना। ऑल द एंट्रीज आर पोस्टेड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। In this case, you will find the credit side more than debit side. Credit side ज्यादा रहेगा। The credit side will be more than debit side. तो total of credit side 2,07,000. 2 lakh credit side 2,07,700. This is the total on the credit side. Now here also 2,07,700. अब इसमें से ये पूरे माइनस कर देंगे। All the debit items will be subtracted. Then you will get the balancing figure 24,200. Balancing figure you will get 24,200. This is the profit. Credit side ज्यादा है तो profit हो गया। तो यहां पर लिखेंगे to profit transferred to PQR 24,200 into ratio will be 5:3:2, 5/10, 3/10. तो 24,000 into 5/10, you are getting 12,100. 12,100. Next है 7260. Last one 4840. If you take the total of these three, you will get 24,200. We have divided 24,200 in the ratio of 5:3:2. 5/10, 3/10, 2/10. This is the end of realization account. अब इसकी एंट्री भी आप पास कर दिए। एंट्रीज में लिख दिया आप रियलाइजेशन अकाउंट डेटा 24,200 to P's capital, to Q's capital, to R's capital. These are the amounts we have taken. Actually, that entry will be passed only after making this account. तो इसके लिए पूरे entries पास करने के बाद you have to leave some 3-4 entries gap. Then you have to make the account and find out the profit or loss. Then you can make the entry. Right? Now, this entry will post it. अब post कर देंगे entry by realization profit. How much realization profit? 12,200, 12,100, sorry. 12,100, 7,260 and 4,840. Profit on realization, we have passed the entry. Next journal entry we have passed is P's loan account data to bank.
Next entry what you have passed, P is loan account data to bank. How much P is loan account data to bank? 30,000. 30,000 रुपए पीस लोन पे कर दिए. नेक्स्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा टू पीस कैपिटल टू क्यूस कैपिटल टू आर्स कैपिटल. तो तीनों पर कैपिटल को क्रिएट करेंगे बाय जनरल रिजर्व. एंट्री देखिए आप, जनरल एंट्री में अमाउंट्स दिया हुआ है 7,500, 4,500 एंड 3,000. नेक्स्ट है Peace capital account data, final adjustment over all the accounts, all the postings on. Realization account तो close हो गया, इसको छोड़ दो. Now we have to find out how much is the balance due to each partner. 30,000 plus 12,100 plus 7,500. The total on the credit side is 49,600. 49,600 is the total on P. P के credit side. उसमें से माइनस 1200 निकालो तो 48,400. तो 48,400 is the amount due to P. This will be paid through bank. Balancing figure. तो 48,400 should be paid to P. तो entry P's capital account data to bank. $48,400. Similarly Q. Q का total credit side, 4 items are there, the total is 43,760. From 43,760 there is nothing to be deducted. Same 43,760 should be paid to Q. 43,760 should be paid to Q. And total of R 22,840. This amount will be paid to R. So P's capital, Q's capital, R's capital. P को जो पे करना है 48,400, Q को 43,760 और R को 22,840. That's all. The accounts of partners capital accounts are closed. Now if you find out the total in bank column, 1,74,500. Both the sides the amount will tally. If you commit the mistake, then definitely your bank account will not tally. So that's a proof. If both the sides are equal, that means we have correctly passed the entries, we have correctly posted the accounts. That's why all the accounts are closed. That's it. Now take a pause and copy it down. Come on, now we'll start the problem number 3. X, Y and Z were carrying on business as a manufacturing of leather goods. The profit sharing ratio 3:2:1. 3 partners X, Y, Z 3:2:1. 3/6, 2/6, 1/6. Their balance sheet. Sundry creditors, Mrs. X's loan. Actually Mrs. X's loan का मतलब ये outsider है. This is not the partner. तो this amount should be transferred to realization. सिर्फ पार्टनर का लोन रहा तो रियलाइजेशन को ट्रांसफर नहीं करना. पार्टनर्स को हटके किसी का भी लोन रहने दो, इट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है. तो मिसेस लोन अकाउंट शुड आल्सो बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. हाँ, वाइज लोन अकाउंट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, डायरेक्टली इट विल बी पेड. जब पेमेंट कर रहे हैं तो वाइज लोन अकाउंट डेटा टू बैंक. रिजर्व फंड ट्रांसफर कर देंगे. रिजर्व फंड अकाउंट डेटा टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल in old profit sharing ratio. Repairs and renewals reserve, same way. कोई भी reserve रहने दो, it will be transferred to partners capital account. Capitals are given. Cash at bank, stock, debtors, less provision, furniture, investment, plant and machinery, prepaid insurance. The firm was dissolved on 31st December. The assets realized. Stock 5,000. Debtors 15,000. Fixtures 3,000. Plant and machinery 60,000. ये assets बेच दिए. जब बेचे तो एंट्री हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन. ये चारों एसेट्स, स्टॉक, डेटार्स, फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी.
उसके बाद X took over investment at an agreed value of 7,000 और एक एसेट है इन्वेस्टमेंट, इसको बेच रहे नहीं बल्कि वन ऑफ द पार्टनर इज टेकिंग इट अवे। बेचते तो बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन, अब बेच रहे नहीं, बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, कौन ले रहा है उसको डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन एंड एग्रीड टू पे ऑफ द लोन टू मिसेस एक्स। अगर लोन टू मिसेस एक्स जो पे करना है ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन को, पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक। लेकिन अब क्या हो रहा है यहां पर, एक्स अंडरटेक कर ले रहा, एक्स इज अंडरटेकिंग दिस लायबिलिटी टू पे द लोन टू मिसेस एक्स, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। द सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 2.5% डिस्काउंट। अब जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसमें से 2.5% कम करके पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक। During the course of realization, it was found that a bill of 2,000 previously discounted by the firm was dishonored and had to be paid. Dissolution के टाइम पे पता चला कि बैंक से एक बिल डिस्काउंट कराए थे और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। अगर डिसऑनर्ड हो गया तो हमको पे करना है, we have to pay the bill. तो again realization account data to bank. When we pay the bill, realization account data to bank. The realization expenses amounted to 1,500. So entry will be realization account data to bank. Journalize the entries to made on the dissolution and show the realization account, bank account and partners capital account. Exactly similar what we have done in the previous problem. First we have to pass the journal entries. Next we have to prepare the realization account, capital account and bank account. पूरे accounts close हो जाना must, right? तो पहले problem number 3. Journal entries. First entry. The first entry is transferring all the liabilities to assets to realization. Transferring all the assets to realization. Realization account data to all individual assets in the balance sheet. Right? Two. Stock. 2. Sundry debtors. 2. Furniture. 2. Investment. 2. Plant and machinery. 2. Prepaid insurance. That's it. So 1,17,800 you will get. 6. So 10,000. Then 21,000, 8,000, 11,000, 67,800. All the assets should be transferred at their book values. The assets should be transferred at their book values, balance sheet values. तो balance sheet में जो values है same values लेंगे. All the assets will be transferred to realization. Being the assets transferred to realization. Narration. Being the assets transferred to realization. Second, अब liabilities देखिए, sundry creditors, account debtor, Mrs. X loan, account debtor, provision